Priyavrut Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My friends, so far आमे monkeys पावर प्रथम दीटा यूनिट प्रथम दीटा सीन सारी आउ से जानी किभली भाव में ए monkeys पा वर्तमान रेडी हो जाइए इनफैक्ट बहुत गुड़े क्षति कर साराणी व्हाइट फैमिली मध्य जोटा कि थर्ड विश थिला थर्ड पर्सन पाखे जो तीन टा विश रु गोटे विश व्हाइट फैमिली मागी सारी आ दुईटा विश पाखे बाकी अच्छी सोफार आम जानी 200 पाउंड तो मिलूँ किंतु से निज पुत्र जीवन जीव यह केबे भावी नथिले व्हाइट फैमिली विलंब करवानी एबे जीवा सीन 3 को नाइट टाइम अ वीक एंड हाफ लैटर संध्या समय 1.5 सप्ताह पर घटना मिस्ट्रेस व्हाइट स्टैंड्स इन द डोरवे weeping as she looks out into the darkness. Mr. White comes downstairs. He goes to her and closes the door, then puts his arm around her. घर रे शोकाकाय परिवेश मिस्ट्रेस व्हाइट कबाड़ पाखे छिड़ा होती युव संतान हरई सी दुखरे म्रियमाण माँ चाह बसी पुअर बाट को अंधार को चाह रही सियाड़ू मिस्टर व्हाइट आसुंच कबाटी को बंद करुँच मिस्टर व्हाइट को धरती मिस्टर व्हाइट जेंटली कहते कम बैक टू बेड इट्स कोल्ड आउट देयर टू नाइट आज बहुत ठंडा हो बाहर पलि आस बेड को मिस्ट्रेस व्हाइट कहते इट इज कोल्ड फॉर माय सन शी सोप्स Suddenly the straightens and turns, clutching her husband's arm. से कांदी कांदी कहते धकई धकई सकई सकई माँ मन बुझुनी कह मो पुओ को तो बेसी ठंडा हो बाहर ऑल ऑफ ए सडन सी टर्न्स सी स्ट्रेटन्स एंड टर्न्स हठात किनी गोटे किसी मन पड़ जाऊँगी हठात किनी टर्न राउंड होती कहवाई कि मिस्टर व्हाइट को मिस्ट्रेस व्हाइट वाइल्डली पूरा वाइल्ड ही कहते द प द मंकीज प हठात कि मन पड़गला अरे प तो अच्छी मंकीज प अरे प मंकीज प मिस्टर व्हाइट व्हाट वेयर कौन कौटी मिस्टर व्हाइट कहते यही सीन टी अत्यंत दुखदायक हृदय विदारक माय डियर फ्रेंड्स मिस्ट्रेस व्हाइट कहते आई वांट इट यू डिडंट गेट रिड ऑफ इट डिड यू मोर दरकार अच्छी मुझे चाहूँगी सांगे सांगे मत तुम्हें ताकू कोड़े आड़े साड़े फोपाड़न ताकू तो यू डिडंट गेट रिड ऑफ इट डिड यू मिस्टर व्हाइट इज अपस्टेयर्स आई थिंक व्हाई हाँ यहाँ मत लगुच अपस्टेयर ऊपर अच्छी ऊपर घरे कहीं कौन है मिस्ट्रेस व्हाइट क्राइंग एंड लाफिंग हिस्टेरिकली मनीष आड़े हसुंच साड़े कांदुंच पुओ आज चली जाइए क्राइंग दुखरे तो कांदुंच हसुंच ऑल ऑफ ए सडन मन पड़ुची आहरी दीटा विश बाकी अच्छी आई ओनली जस्ट थॉट ऑफ इट व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ इट बिफोर व्हाई डिडंट यू थिंक ऑफ इट मोर एबे मन पड़ला कहीं आगुरी मोर मन पड़ला नहीं तुमको भी कहीं मन पड़ला नहीं मिस्टर व्हाइट थिंक ऑफ व्हाट कौन भाभी था क्या विषय मिस्ट्रेस व्हाइट द अदर टू विशेस वी हैव ओनली हार्ड वन अरे आउ दुईटा विश बाकी थिला आम पर तो केवल गोटे विश आम कहे ना आहरी दुईटा बाकी अच्छी मिस्टर व्हाइट फेसली वाज नॉट दैट एनफ सेतिकी कौन तुम पर्याप्त है नहीं मिस्टर व्हाइट नो विल हैव वन मोर गो गेट इट डाउन एंड विश अ बॉय अलाइव अगेन ना जाओ ताकू आनो जल्दी ताकू धर एवं को आम पुओ को पुणी जीवंत फेरई दो मिस्टर व्हाइट स्टेपिंग बैक इन हॉरर यू आर इनसेन हॉरर रे हाँ करी चाहिए पछकू पुणी माने डरीला भाया कुछ यू आर इनसेन तुम पागल हो गलन ना कौन मिस्ट्रेस व्हाइट आई वांट माय सन बैक आई वांट टू सी माय सन मो पुओ को चाहूँगी मो पुओ को देखा चाहूँगी मो पुओ को पुनर्बार फेरी आने चाहूँगी मिस्टर व्हाइट कहते यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग तुम्हें निजे जानी ना तुम्हें कौन कथबार्ता करुच कौन कहूच मिस्ट्रेस व्हाइट कहते वी हैड द फर्स्ट विश ग्रांटेड
व्हाई नॉट द सेकेंड जदि आम प्रथम विश ग्रांट है ताले कहीं आम सेकेंड विश हम नहीं मिस्टर व्हाइट कहते इट वाज अ कोइंसिडेंस एटा गोटे कोइंसिडेंस थिला दैवात केमती हो जाइथिला गो एंड गेट इट एंड विश अड़ी बसुचंती जिदी करुचंती मिस्ट्रेस व्हाइट पुत्र हराइथिबा मार चित्कार सुबुची कहते जाओ तुम्हें आण आ माग विश कर जिदी धरिचंती किए ना मिस्ट्रेस व्हाइट मिस्टर व्हाइट फेसिंग हर and taking her by the arms. He has been dead 10 days. And besides, I didn't want to tell you this, but I could only recognize him by his clothes. He was mangled in the machinery. If he was too terrible for you to see then, how would it be now? ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବାହୁରେ ନେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି 10 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଆମ ପୁଅକୁ ମରିବାର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଏତେ ଜୋରରେ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କୋଚା ମୋଚା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ କେବଳ ତା'ର ପୋଷାକରୁ ଚିହ୍ନିଲି ଯଦି ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ବା ଦେଖିପାରୁନଥିଲା ଏବେ କେମିତି ତୁମେ ଦେଖିବ Bring him back. Do you think I would fear my own son? फेरेई आण ताकू तुमको कौन लगुच मु मो निज पुओ को भय करी मिस्टर व्हाइट गो स्लोली अपस्टेयर्स फॉलोड बाय हिज वाइफ ही टेक्स द पाव एंड स्टेयर्स एट इट सीन को बुझंतु मिस्टर व्हाइट जाउचंती आस्ते आस्ते अपस्टेयर को पछे पछे मिस्ट्रेस व्हाइट तांको अनुकरण करी जाउचंती आउ पावटी को नेकी तार को चाहिचंती मिस्ट्रेस व्हाइट विश कहते विश कर मिस्टर व्हाइट वीकली कथा कही पारना कहते इट इज अ फुलिश एंड विकेड एटा बोकामी और दुष्टामी छड़ा किछि नुह मिस्टर व्हाइट जिदी धरचंदी कहते विश विश कर तुम्हें मिस्टर व्हाइट होल्डिंग अप द पाव आई विश माय सन अलाइव अगेन सो दिस इज द सेकंड विश मिस्टर व्हाइट कहते मु मोर पुत्र को पुनर्जीवित देखा चाहूँगी सीन टी बुझंतु ही ड्रॉप्स द पॉ एंड सिंक्स ट्रेम्बलिंग इनटू अ चेयर मिस्ट्रेस व्हाइट रन्स टू द विंडो एंड स्टैंड्स लुकिंग आउट द क्लॉक टिक्स ए स्टेयर क्रिक्स मिस्टर व्हाइट कम्स एंड सिट्स बाय हर मिस्ट्रेस व्हाइट कम्स एंड सिट्स बाय हर हस्बैंड फाइनली a quiet knock is heard मिस्ट्रेस व्हाइट जंप्स अप विश करी सारा परे पॉटी तांका हाथ रू पड़ी जाउची मिस्टर व्हाइट ट्रेम्बलिंग है कि गोटे चेयर रे जाई कि बसी पड़ुछंती मिस्ट्रेस व्हाइट विंडो पाखरे जाई कि बाहर को चाहिचंती घंटार कंटाटी टिक टिक साउंड होउची गोटे स्टेयर क्रिक होउची साउंड कटर कटर होउची मिस्ट्रेस व्हाइट आसिकी निज हस्बैंड पाखरे बसुचंती ऑल ऑफ ए सडन ठक ठक साउंड होउची मिस्ट्रेस व्हाइट उठी दौड़ुचंती jumps up Mrs. White what is that Mrs. White कौन सीटा Mr. White shakily a mouse it's just a mouse in the wall अरे गोटे मूसा ही अरे मूसाटे कटर कटर होतबो मूसार साउंडटा another knock louder this time एथर आहुरी जोरी ढक 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 साउंड सुबिला Mrs. White it's Hobart it's our son She starts toward the stairs, but Mr. White grabs her by the arm. Mrs. White कहते ये हबट आम पुओ फेरी आसला खुशी से दौड़ा को चेष्टा कर स्टेयर आड़ को पाहाच आड़े जावाई चेष्टा कर मिस्टर व्हाइट धरी पकाउछंती मिस्टर व्हाइट कहते व्हाट आर यू गोइंग टू डू अरे तुम्हें कौन करुच मिस्टर व्हाइट कहते कौन तुम्हें करने जाऊच मिस्टर व्हाइट कहते इट्स हबट व्हाट आर यू होल्डिंग मी फॉर लेट गो सो आई कैन ओपन द डोर अरे मो पुओ हबट आसी तुम कौन पे मते धरिच मते जीवा को दियो मो पुओ को आसीबा को दियो मिस्टर व्हाइट होर्सली डोंट लेट इट इन अरे ताको भितर को आसीबा को दियो नहीं डोंट लेट इट इन मिस्टर व्हाइट हाउ कैन यू बी अफ्रेड ऑफ योर ओन सन लेट मी गो तुम केमिति तुम निज पुओ को डरी पायो मते जीवा को दियो The knocking is louder and louder. She breaks free and runs down to the door. शेष आसीगला
आहुरी जोर सीन टी बुझिया पे चेष्टा करतंतु एतटा आहुरी जोर धड़ 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 साउंड हला मिस्ट्रेस वाइट छाटी पिटी हेकी दौड़ुचंती डोर पाखकू खोलिबे बोली मिस्ट्रेस वाइट आई एम हियर हबट आई एम राइट हियर पुओ मु आसुची पुओ मु जाउची हबट मु जाउची कहिकी दौड़ुचंती मिस्ट्रेस वाइट शेष सीन टी को डिस्प्ले होची as he struggles with the lock Mr. White falls to his knees. He picks up the monkey's paw from the floor and holds it up his right hand. His lips move, but we can't hear him. Over the thunderous knocking, he drops the paw. At once, the knocking stops and the door springs open. There is a pause, and then a long, loud wail from Mrs. White. Beyond her, the road is empty. शेष सीन रे गुड़े गुड़े जिनस कुहा जाऊनी कि देखिकी जानी हेबो बुझी हेबो मिस्ट्रेस वाइट दौड़ुचंती खोलुचंती कबाट खोलिया पई तांको असुविधा होची जस्ट तार लॉक को खोलिया चेष्टा करचंती से समय देखा जाउची मिस्टर वाइट आंठी पडुचंती पटी को हाथ रे धरुचंती तांको लिप टा मूव होची हमको किंतु सीन ने कोन से कहउचंती हम जानि पारुनाती हठात कि हाथ रु पटी पड़ जाऊँगी आउ हठात कि से जो साउंड अच्छी सी बंद हो जाऊँगी किसी समय पर कौन होची ना मिस्ट्रेस वाइट जो कबाट खोली गोटे जोर लंबा कांदना शुभुची केवल से कांदुचंती कारण तांका फ्रंटा कंप्लीटली एम्प्टी थिला जदिओ एठी अथर थर्ड विशटा कौन तार डिटेल्स कहूना किंतु निज पुत्र को देखिचंती अत्यंत भयंकर देखा जाउछला मिस्ट्रेस वाइट ताकू देखी पारिबेनी जानी पारिबेनी निज पुओ को देखी डरिबे भलिया परिस्थिति थिला तेणु मिस्टर वाइट कौन करिछंती शेष विश कबाट खोलिबा आगुरु मागुछंती शेष विश रे ताकू फेरे जीवा पई कहिचंती बोधे तेणु हठात किनी किछि साउंड नाही साउंड भी पळे जाउची आउ मिस्ट्रेस वाइट दौड़ी दौड़ी जिते कबाट खोली किछि न पाई निज पुओर मरीजार विरह कांदुछंती अत्यंत दुखदायक हरर टाइप रो थिला हमर स्टोरी मंकीज पॉ We have around 7 questions. We won't make late. Let us discuss the questions and answers. The first question of scene 3 is why did not Mr. White want to make the second wish? कहीं चाहू नथिले सेकंड विश करबा पाई मिस्टर व्हाइट was terrified with the way the first wish was granted. He said it was a coincidence, but they had lost their son. Mrs. White wanted her son alive as the second wish. By that time, Mr. White had sensed the severity and gravity of the paw. He explained to Mistress White that it had already been 10 days their son had died. He added that Hobart was so badly crushed in the machinery that Mr. White could recognize him only by his clothes. He further added that if he was terrible for you to see, then how did it be now? Meaning thereby, Mr. White was scared and sure that if he wished their son to be alive again, they would get him in that crushed form, which would be even more terrible and shocking. Now come to the next question, number 13. Bring him back. Do you think I would fear my own son? Why does Mistress White say so? काहे कि Mistress White एक कथा कहिले Bring him back. तमे कौन भावुचो मु मोर निज पिला को डरिबी बोली, right? So Mistress White was under a lot of pain and sadness because of the loss of her only son. She asked her husband to wish again and get their boy alive again. Mr. White said that it had already been 10 days. He also explained that he was so badly crushed that he could recognize Herbert only by his clothes. It was terrible to see him that time and would be more terrible to see him at present. Mr. White somehow knew in his heart that if they wished him back, they would get him in that ghastly state. Mrs. White was ignorant to this fact, and under extreme emotion and urge to get her son back, she uttered these lines, right? Next question. What was the final wish? Last wish ta kon thila?
Mr. White made the second wish and wanted his son to be alive again. Upon that, there was a loud knocking at the door. Mrs. White rushed to the door, hoping to see her son back alive. But Mr. White feared the consequences, thus he knelt down on the floor, held the paw up in his right hand, and uttered his final wish. Nobody was able to hear his words as there was a loud thunderous knocking. It could only be imagined that since Mr. White feared the consequence of seeing his son, he would have wished that his son should be sent back from where it had come. Next question jiba. Did the whites get what they really wanted? Jaha चाहूँଥିଲେ ता पाइले कि reason दबा answer रो. Whites first wished for 200 pounds to pay off their mortgage. They indeed got the amount, but they paid a huge cost to get that. As the old holy man had foretold, anyone who tried to interfere with the fate would be sorry. Morris too warned the whites that they would not like the consequence of the wish. Yet whites were inclined to wish, thus they paid the price with the life of their only son, Hobart. Next question. What role did the author want the monkey's paw to play here? Author कौन चाहूँଥିଲେ को भली role play करियो monkey's paw? The author wanted to convey a very deep message through the monkey's paw. He wanted to show everyone that fate ruled people's life and that anyone who tried to interfere with fate would have to be sorry. He proved this with the example of three men who hoped to change their fate, but in the end they got struck in the face. That means semanku repent करिया पड़थला तांको wish में. Next question jiba. What did the holy man want to prove to people by putting the spell on the paw? कौन चाहूँଥିଲେ holy man टी prove करिया ପାଇଁ? The holy man wanted to prove to people that fate ruled people's lives and that anyone who tried to interfere with the fate would be sorry. Next question, last question. In your opinion, did the holy man make his point? Holy man तांकर जहाँ point थला ताको prove करूचंती कि why? Why not? Holy man wanted to show that anyone who tried to interfere with fate would have to be sorry in the end. According to him, fate ruled people's lives. He very much made his point clear. He put a magic spell on the monkey's paw so that three people could each have three wishes from it. The first owner had three wishes, amongst which third was his own death. Second owner, Morris, who said that the paw has caused enough trouble to him, though he had his three wishes granted. Then the third owner, Mr. White, who repented having the paw as they gave the price of their wish with their sons' lives. It turned disaster for all three of them and they all were sorry about the consequence. My friends, it's really happy आपण मानकु जणेबाकु कि सेकेंड ईयर जो यूनिट 2 रो सबु चैप्टर आमे फिनिश करचंती आ प्रत्येक चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर विथ एनालिसिस मध्ये आमे हमर वेबसाइट रे अपलोड करचंती आपण मानकर एमती भल पाइबा थाउ आगु को आमे आहुरी बहुत गुडे जिंस आनी परिबा. Thank you very much. Please like, subscribe our channel and yes, don't forget to share because sharing is caring. Thank you very much my dear friends. Thank you.